Hello guys, so I am Nitish. I welcome all of you to channel the Nitish Patel. So friends, in this particular video, we are going to learn the difference between a bay and a gulf. Friends, why this term is important? Because the gulf and bay, the meaning of both the words in Hindi is खाड़ी. So दोस्तों, हिंदी में इन दोनों वर्ड्स का मतलब खाड़ी है. इसीलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स गल्फ़ और बे को एक ही मान बैठते हैं. बट फ्रेंड्स, द रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट. गल्फ़ एंड बे both are different terms. Before we begin, I have question for you. Which is the largest gulf and largest bay in the world? So I want all of you to comment the answer in the comment section box. So let's begin. A bay is a small body of water that is set off from a larger body of water, generally where the land curves inward. So दोस्तों, बे खाड़ी एक ऐसा आकृति है पानी का जो कि तीन साइड से लैंड से घिरा हुआ हो और एक साइड से वाटर से घिरा हो, जिधर की माउथ वाटर की तरफ हो. इन सिंपल वर्ड्स, bay is a water body surrounded on three sides by land with the fourth side mouth wide open towards oceans. बे उसको कहते हैं जो कि तीन साइड से लैंड से घिरा हो और चौथा साइड पानी से घिरा हो, जो कि एक बहुत ही बड़ा वाटर बॉडी से घिरा हो, जो कि उसके मुंह का काम करता है. फॉर मोर क्लैरिटी आई मस्ट शो यू मैप. So you can here compare that one side, two side, three side. This is surrounded by the land, and the fourth side, this is surrounded by the Indian Ocean. So friend, ये एक large mouth की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको बे कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल. But in the case of Gulf, this mouth is very narrow, or sometimes it is even enclosed. So let's learn about the Gulf. A Gulf is a large body of water, sometimes with narrow mouth that is almost completely surrounded by land. So for better understanding, I should show you a map again. So you can see here, this map is of a Gulf of Mexico, which is situated between United States and Mexico country. So you can see this is a very narrow pass, and this is also called as strait. So now I hope you can understand that what is the difference between the Gulf and a bay. So bay has a very large mouth, whereas a Gulf has very small mouths. So this is the actual difference between the Gulf and a bay. Moving towards the difference, so we have the table here. A Gulf is typically larger than the bay. Generally Gulf जो हैं bay से बड़े होते हैं. A bay is typically smaller than a Gulf. A Gulf has a narrow mouth. Friends, this point is very important. A Gulf has a narrow mouth. A bay has a wide mouth. And जो bay का mouth है water की तरफ रहता है. A Gulf is less enclosed towards the water. Gulf जो है almost लैंड से घिरा रहता है, बट बे इज मोर इनक्लोज टुवार्ड्स द वाटर. जो बे है पानी की तरफ से ज़्यादा घिराव रहता है. अ गल्फ इज कनेक्टेड टू द ओशियन. अ बे इज कनेक्टेड टू द ओशियन और अ लेक. सो गल्फ जो है हमेशा ओशियन से कनेक्टेड होगा, बट एक जो बे है जिसका मतलब भी खाड़ी होता है, वो कि ओशियन या लेक किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है. सो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था कि विच इज़ द लार्जेस्ट बे and largest lake in the world. So largest bay is the Bay of Bengal. The Bay of Bengal. And largest gulf is Gulf of Mexico, जो कि मैंने अभी मैप में दिखाया था दोस्तों. ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि लार्जेस्ट गल्फ है, और ये रहा
बे ऑफ बंगाल जो कि लार्जेस्ट बे है. So this is all in this video. I hope you understand. If you like the lecture, please share the video and subscribe the channel. Thank you. Jai Hind.